अथ श्री राघवेंद्र स्तोत्रम् श्री पूर्णबोध गुरुतीर्थ पयोक्तिपारा कामारिमाक्ष विषमाक्ष शिरस्पृशन्ति पूर्वोत्तरामित तरंग चरत्सु हंसा देवादिसेवित परांग्रि पयोजलग्ना जीवेश भेद गुणपूर्ति जगत्सु सत्व नीचोच्च भाव मुखनक्रगणैः समेता दूर्वाद्य जापति गिरैर्गुरु राघवेंद्र वाग्देवता सरिदमुं विमलीकरोतु श्रीराघवेन्द्र सकल प्रदाता सपादकञ्चद्वय भक्तिमध्यः अगाध संवेदन दुष्टिवज्रः क्षमा सुरेन्द्रोत्तमां सदायम् श्रीराघवेन्द्रो हरिपादकञ्ज निषेवणालब्ध समस्त संपत् देवस्वभावो दिविजद्रुमोय इष्टप्रदो मे सततं स भूयात् भव्यस्वरूपो भवदुःखतूल संघाग्निचर्य सुखधैर्यशाली समस्त दुष्टग्रह निग्रहेशो दूरत्रयोपप्लव सिंधु सेतुः नीरस्वदोषो निर्वद्यवेषः प्रत्यर्थिमूकत्वनिदानभाषः विद्वत्परिज्ञेय महाविशेषो वाग्वैखरी निर्जितभव्यशेषः संतान संपत् परिशुद्ध भक्ति विज्ञान वाग्देह सुपाठवादीन् दत्त्वा शरीरोक्त समस्त दोषान् हत्वा सनो व्याद्गुरु राघवेन्द्रः यत्पादोदक संचय सुरनदी मुख्यापगासादिता संख्यानुत्तम पुण्य संगविल सत्प्रख्यात पुण्यवः दूस्तापत्रयनाशनो भीमः वन्द्या सुपुत्र प्रदो व्यंगसंग समृद्धिदो ग्रहमः पापापः संश्रये यत्पादकञ्जरसा परिभूषितांगा यत्पादमग्रपुल्पायितमानसायि यत्पादपद्मपरिकीर्तन जीर्णवाचः तद्दर्शनं दुरितकाननदावभूतं सर्वतन्त्र स्वतन्त्रोत्सो श्रीमद्मतवर्धनः विजीन्द्रकराब्जोत्थ सुरीन्द्रवरपुत्रकः श्रीराघवेन्द्रो यतिराट् गुरुर्मे स्याद्भयापः ज्ञानभक्तिसुपुत्रार्युः यशस्वी श्रीपुण्यवर्धनः प्रतिवाद्य स्वान्त भेदचिह्नादरो गुरुः सर्वविद्याप्रवीणोऽन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते अपरोक्षीकृतश्रीशः सुमपेक्षितभावजः अपेक्षितप्रदातान्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते दया दाक्षिण्य वैराग्य वाक्पाटमुखाङ्कितः शापागुणशक्ततोऽन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते अज्ञानं प्रतिभ्रान्ति संशयापस्मृतिक्षयाः कौंठ्य मुखाये चेन्द्रियोद्भवाः दोषास्ते नाशमायान्ति राघवेन्द्र प्रसादतः श्रीराघवेन्द्राय नमः इत्यष्टाक्षरमन्त्रतः जपिता भाविता नित्यम् ईशास्पूर्ण संशयः आन्तुलक्काशान् दोषान् आत्मात्मीय समुद्भवान् सर्वानपि समर्थाश्च ददातु गुरुरात्मवित् इति कालत्रये नित्यं प्रार्थनां यः करोति सः इहाप्त सर्वेष्टो मोदते नात्र संशयः अगम्य महिमा लोके राघवेन्द्रो महायशाः श्रीमद्मतदुग्धाब्धि चन्द्रोतु सदानगः सर्वयात्राफलावाप्ते यथाशक्तिप्रदक्षिणं करोमि तव सिद्धस्य वृन्दावनगतं जनं शिरसा धार्याम्यद्य सर्वतीर्थप्राप्तये सर्वाभीष्टार्थसिद्धर्थं नमस्कारं करोम्यहं तव संकीर्तनं वेद शास्त्रार्थज्ञानसिद्धये संसारे क्षयसागरे प्रकृतितो गाधे सदा दुस्तरे सर्वावद्य जलग्रहैरनुपमयि कामादिभङ्गाकुले नानाविभ्रम दुर्भम भीतभयस्फोमादिमेनोत्कटे कोत्कृष्टविशेषमुद्धर गुरो मामग्नरूपं सदा राघवेन्द्र गुरुस्तोत्रं यः पठेत् भक्तिपूर्वकं तस्य कुष्ठादिरोगाणां निवृत्तिस्तरया भवेत् अन्धोऽपि दिव्यदृष्टिः स्यात् ईडमूकोऽपि वाक्पतिः
पूर्णायु पूर्णसम्पत्ति स्तोत्रस्यास्त्रपाद्भवे यप्सिते जलमेतेन स्तोत्रैणैवाभिमन्त्रितम् तस्य कुक्षिगता दोषाः सर्वे नश्यन्ति तत्क्षणात् यद्वृन्दावनमासाद्य पङ्गुखण्डोऽपि वा जनः स्तोत्रेणानेनः कुर्यात् तदक्षणनमस्कृतिः स्वयङ्गालो भवेदेव गुरुराजप्रसादतः सोमसूर्योपरागे च पुष्यार्कादिसमागमे योनुत्तममिदं स्तोत्रम् अष्टोत्तरशतं जपेत् भूतप्रेतपिशाचादि पीडा तस्य न जायते एतत् स्तोत्रं समुच्चार्य गुरोरुन्दावनान्तिके दीपसंयोजनाज्ञानं पुत्रलाभो भवेत् ध्रुवम् पर्वादियो दिव्यज्ञानभक्त्यादिवर्धनम् सर्वाभीष्टप्रवृद्धिस्य नात्र कार्याविचारणा राजचोरमहाव्याघ्र सर्पनक्रादिपीडनम् न जायते स्तोत्रस्य प्रभावान्नात्र संशयः यो भक्त्या गुरुराघवेन्द्रचरणद्वन्द्वं स्मरन्यः पठेत् स्तोत्रं दिव्यमिदं सदा नहि भवेत् तस्या सुखं किञ्चनः किञ्चित्त्वात् समृद्धिरेव कमलानाथ प्रसादोदयात् कीर्तिद्विद्विता विभूतिरतुला साक्षी हया स्तोत्रहि इति श्रीराघवेन्द्र गुरुराज प्रसादतः कृतं स्तोत्रमिदं पुण्यं श्रीमद्भीष्यपणाभिदैः पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे दूर्वादिद्वान् सर्वे वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्र गुरुवे नमो अत्यंत दयालवे इति श्रीमद् अपणाचार्य विरचितं श्रीराघवेन्द्र सूत्रम्।